All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Peace, blessings and endless salutations upon the cream of creation, Hazur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam. Hazur Murshid Kareem, the heartbeat of millions of hearts, Hazrat Allama Pir Alauddin Siddiqui Sahib, Damat Barakat Mulaliya, my brother Pir Muhammad Tayyib Rahman Sahib. We are very fortunate, brothers, that in our presence is Hazur Shaykhul Alam Damat Barakat Mulaliya, and we are very fortunate that they are blessing us with their ziyarah. With regards to Tahaffuz and Amus Risalat, I would like to give one message and then I will conclude. One day Abu Jahl, he decided to test the prophecy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he took some stones in his hand, he closed his hand and he went to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where he says to the Messenger of Allah that if you were to tell me what is in my hand, I will bless myself with the treasure of Iman. If you were to tell me what is in my hand, then I shall accept Islam as my religion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam smiled and replied that, "O Abu Jahl, would you like me to tell you what is in your hand?" Listen, brothers, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that would you like me to tell you what is in your hand, or would you like what is in your hand to tell you who am I? जब अबू जहल ने चाहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आजमाए, तो उसने अपने हाथ में कंकरियां लेके दरबार रिसालत में पहुंचकर हजूर से कहने लगा कि अगर आप बताएं कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू जहल, क्या तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है मैं बताऊं कि वो क्या है, या तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? तो अबू जहल ने कहा कि अगर ये हो जाए तो क्या ही कहने। तो हजूर ने जब तवज्जो की तो जो अबू जहल के हाथ में कंकरियां थी वो पुकार उठी कि ए अबू जहल, जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो ये तो मुहम्मद रसूलुल्लाह है। With the blessed sight of Rasulullah, the stones that were in the hand of Abu Jahl, they proclaimed that this is none other than the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, in order to defend the honor of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, I invite each and every one of you on 19th of April, on Sunday 19th of April, to take part in the Julus and in the Ijtima organized by Hazur Shaykhul Alam Damat Barakat Mulaliya. We need to attend this mehfil to show the whole world that we love our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Finally, I would like to once again, मैं अपनी तरफ से और अपने भाई पीर मोहम्मद तैयब रहमान साहब की तरफ से हजूर शेखुल आलम दामत बरकात मुलालिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस सेंटर में तशरीफ़ ले आए। और आखिर में मैंने हज़रत साहब के लिए कुछ दो चार लफ्ज़ों को मिला के एक शेर लिखा है कि तारीफ़ करूं कैसे अपने मुर्शिद की, अल्फाज नहीं मिलते, आप जैसे चमन के फूल बार बार नहीं मिलते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान।